Assalamu alaikum. Dear students, welcome in the class of inorganic chemistry. Today we are going to discuss structure, properties, advantages and disadvantages of liquid ammonia as a solvent. So this is the first non-aqueous solvent which we are going to discuss. This presentation is submitted by Muhammad Rafiq Khan. A nice presentation. So the contents which we are going to discuss, they include structure and geometry of ammonia, its physical properties, then we will go to the chemical properties, comparison of liquid ammonia and water, advantages of liquid ammonia and disadvantages of liquid ammonia. So this is the IUPAC ID of liquid ammonia, which is AZANE, AZANE, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की आईडी अमोनिया के लिए है AZANE. So in ammonia, as we know, the molecular formula of ammonia is NH3. So in ammonia we have one nitrogen, three hydrogens. It is a colorless liquid with strong odor. You can see here the geometry. This is tetrahedral electron pair geometry. Depending upon the electron pairs present in the outermost shell of nitrogen in liquid ammonia, uh, चार इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, उनमें से तीन ये बॉन्ड पेयर हैं और एक ये लॉन पेयर हैं। तो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे हम कहेंगे कि इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहीड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, बट फ्रॉम फोर इलेक्ट्रॉन पेयर वन ऑफ देम इज लॉन पेयर। तो जो इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री है, अगर हम ये लॉन पेयर को कंसिडर ना करें, सो इट हैज़ ट्राइगोनल पिरामिडल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब इस लॉन पेयर की वजह से क्या होता है कि इसका ये जो बॉन्ड एंगल है, आमतौर पे जो टेट्राहीड्रल बॉन्ड एंगल है वो 109 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लॉन पेयर विल एक्सर्ट रिपल्शन टू दिस एंड दिस बॉन्ड पेयर, और ये वाला एंगल जो है बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है इसकी वजह से, विच इज़ 107.3 डिग्री। So these are the properties of liquid ammonia. You do not have to remember, you do not have to memorize these properties. We will just go through. For example, molecular mass 17.03 है, colorless है, order sharp, intensely irritating order है, physical state इसकी गैस है, melting point minus 77.7 डिग्री। ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, इसका ये आ सकता है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया का ये -33.35 है। आग इसको 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लैश पॉइंट या आग लग जाती है, डिकम्पोज हो जाता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसकी डेंसिटी दी हुई है, राइट। गैशियस और लिक्विड फॉर्म में वेपर डेंसिटी है, क्रिटिकल टेम्परेचर 132.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी जिसपे ये गैशियस से लिक्विड फॉर्म में इस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाता है अगर इसका क्रिटिकल प्रेशर जो है वो अचीव हो जाए, यानी 111.3 एटमॉस्फेयर, विच इज़ क्वाइट हाई। तो इसको मुश्किल से ही ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हीट ऑफ फ्यूजन इसकी 58.51 है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन 23.3 किलो जूल पर मोल एंड हीट ऑफ कंबस्टन इज -316 किलो जूल पर मोल, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So chemical properties, its chemical formula, type of base, this is like kind of weak base, affinity water के साथ high affinity है, corrosive to some metals, oxidation power, ये reducing agent है, strong reducing agent है, quite reactive है, volatility increase with increase in pH. So ammonia is one of the extensively used solvent after water, and this is an aprotic solvent, earliest and most extensively investigated solvent,
Franklin, Carnes and Caddy carries most work in liquid ammonia at University of Kansas during 1930 to 40. So now we will compare the properties of liquid ammonia and water. Ammonia is less strongly associated through hydrogen bonding as compared with water. We have already discussed the freezing and boiling point of ammonia, and we know the freezing point of water is 0 and boiling point is 100 degrees centigrade. It has lower dielectric constant as compared with water, and it has less ability to dissolve many salts as compared with water. It has high ability due to high dielectric constant to dissolve salts. Polar compounds, these are less soluble in it, while polar compounds, these are more soluble in water. So why we need liquid ammonia? Liquid ammonia is a better solvent than water for iodine compounds. Iodine compounds के लिए ये important point है याद रखने के लिए कि liquid ammonia iodine compound के लिए ज़्यादा better solvent है और इसके लिए अलावा non polar compounds के लिए भी because they are water insoluble. So hydrocarbon for hydrocarbon liquid ammonia is a good solvent. Liquid ammonia can dissolve alkali metals without apparent chemical reaction, but water does not. So this is also an important point. वाटर मेटल्स जो हैं वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, लेकिन लिक्विड अमोनिया चूंकि वाटर से कम रिएक्टिव है, उस वजह से ये अल्कली मेटल को डिसॉल्व करता है विदाउट बीइंग रिएक्शन विद देम, being reactive with them. Because of marked differences in solubilities of various substances in liquid ammonia, uh, and water, numerous synthetic reactions which cannot be carried out in water, they can be conveniently carried out in liquid ammonia. So these are the advantages of liquid ammonia, which is continuing. Liquid ammonia has little solubilitic tendency than water towards the dissolved solutes. Ammonolysis reactions are less than solubilisis reaction. इसकी चूंकि solubilitic tendency कम है, तो ये solutes के साथ chemical reaction किए बगैर उनको dissolve करेगा. Ammonia is most basic of all the solvents, therefore it acts as a useful solvent for variety of acidic substances, both in organic as well as organic. So what about the disadvantages? Elaborate equipment and special techniques are required to carry out the chemical reaction in liquid ammonia because of its physical properties. Liquid ammonia is extremely hygroscopic, quickly absorb water, so reaction cannot occur. Uh, Hygroscopic care must be taken to exclude moisture from ammonia system. As it is hygroscopic, it can absorb moisture, तो इसलिए हमें सिस्टम को फुली एवैक्यूएट करना पड़ेगा ताकि कोई भी वाटर वेपर सिस्टम के अंदर ना हो, इक्विपमेंट के अंदर ना हो, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया. Like you, I am also happy that this is a short lecture. In the next lecture, we will meet with some of the reactions which can be carried out in liquid ammonia. Till then, Allah Hafiz.